Here we continue with the next part of this chapter is matter around us pure. In last video we do true solutions, colloid suspension, heterogeneous mixture, homogeneous mixtures, elements, compounds, and introduction part of them is matter around us pure. So up to this we cover the half chapter. Now in this video we deal with the concentration of the solution and deals with some numerical part of this chapter. From here now I'm continuing the chapter, that is first is saturated solution. So here I am dealing with the next part of this chapter. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और ये वाला एस्पेक्ट जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द लैब पॉइंट ऑफ व्यू. लैब में हम ज़्यादातर सैचुरेटेड सोल्यूशंस बना के अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं. Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of the solute at a given temperature. तो at a given temperature पे अगर हम और solute ना ऐड कर सकें और वो थोड़ा सा salt जो है वो बचना चाहिए आपके solution में. When you are preparing the solution you are adding salt and water, salt and water, salt and water, but some residue आप तब तक मिक्स करोगे जब तक वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो जाएगा. कम्प्लीटली मिक्स होने के बाद आप थोड़ा सा सॉल्ट और डाल के देखोगे कि क्या अब ये मिक्स होता है. दैट मीन्स जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसने अपनी पूरी स्पेस ले ली है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में. अब आप इसमें सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेचुरेशन सोल्यूशन जो है वो बन चुका है. तो इट इज़ अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. तो उस गिवन टेम्परेचर पे आप और सोल्यूट नहीं डालोगे तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution of the substance. तो solubility को हम क्या कहते हैं, solubility मतलब घुलने की क्षमता. तो solubility जो होता है of a substance वो कैसे पता चलता है कि कितना amount of solute जो है वो आपने अपने saturated solution में डाला है. तो that is considered to be the solubility. Unsaturated solution, it is a solution which can dissolve some more amount of solute at a given temperature. Given temperature पे आपने उसमें solute डाला और वो completely dissolve होता जा रहा है. तो that means वो unsaturated solution है, उसका हमें कोई रेशो नहीं पता चल रहा है. अब ये देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें कैसे प्रिपेयर करना है. सपोज वी आर टेकिंग 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स में हमने 50 ml वाटर लिया. ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यूसली स्टरिंग मतलब हम इसे ग्लास रॉड से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे टिल नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, जब तक हम इसमें और कोई सॉल्ट नहीं डालेंगे. Similarly, add sugar in other beaker with continuously stirring till no more sugar dissolve in it. Continuously हम उसे stir करेंगे. We get the saturated solution of salt and sugar. हमें saturated solution मिल जाएगा. If the mixtures are heated, it dissolves some more amount of solute. जैसे ही अगर हम मिक्सचर को और हीट करेंगे तो हमें उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स शुगर और सॉल्ट हमें उस बीकर में डालना पड़ेगा. द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. शुगर का अमाउंट डिफरेंट होगा सॉल्ट से. सॉल्ट का सपोज हम 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं तो हमें शुगर सपोज हो सकता है कि हमें 17 ग्राम्स डालना पड़े. तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 ग्राम सॉल्ट पे ही अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है तो 5 ग्राम शुगर पे ही आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बने. दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल साइज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स. तो दैट इज़ द डिफरेंट एस्पेक्ट. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरी विद द टेम्परेचर के हिसाब से वेरी भी करती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. So these are the example diagrammatically explanation for the saturated and unsaturated solution. Here we take the 30 gram of NaCl and dissolve in 100 ml of the H2O. We get the unsaturated solution containing 100 ml of H2O and 30 gram of NaCl. एक completely आपका देखो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया, बॉटम पे कुछ नहीं बचा है. नेक्स्ट केस में हमने 40 ग्राम ऑफ NaCl लिया, 10 ग्राम ज़्यादा लिया NaCl क्योंकि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो टेम्परेचर भी देखना है कि किस टेम्परेचर पे वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है. तो 40 ग्राम ऑफ NaCl लिया हमने
उसको 100 ml हमने H2O में डाला, तो दिस शोज़ दैट सम अमाउंट ऑफ एडिशनल हमने जब डाला तो कुछ अमाउंट जो है वो अनडिस्टर्ब, जो कि उसके अंदर रिएक्ट नहीं करा है, पानी वाटर के स्पेसेस के बीच में ये नहीं ऑक्यूपाई कर पाया स्पेस, और ये लास्ट में सेटल डाउन हो गया, तो दिस इज़ रिमेन अनडिजॉल्व, तो दिस इज़ योर अनडिजॉल्व पार्ट. So here this type of solution is known to be the saturated solution, which containing 100 ml of H2O and 36 gram of NaCl in case of water, and rest 4 gram of NaCl remains undissolved, which is settle down at the bottom. So this is the proper difference between saturated and unsaturated solution. Now next is your concentrated and dilute solution. So here we can see by the diagram, there are two diagrams, one having the little amount, one having the more amount. So you can notice here कि सबसे पहले तो आप कलर्स देखिए दोनों के, तो एक जो कम अमाउंट में है that is dark in color as compared to the another one. So in case of little amount, this is considered to be the concentrated, because here solute particles are present in large amount as compared to the solvent particles. सॉल्वेंट जो है यहाँ पर कम अमाउंट में है, और जो सॉल्यूट है वो आपके ज़्यादा अमाउंट में है. आप कलर कॉम्बिनेशन से भी दे सकते हो इस सर्कल डायग्राम के अंदर. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. वेयर एज इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कम है और आपका सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है. दैट मीन्स वाटर इज़ मोर इन दिस केस ऑफ डाइल्यूट केस, और इन केस ऑफ कंसनट्रेटेड द वाटर इज़ लेस. So here it is a dilute solution, here it is a concentrated solution. So these are the two types of solution, concentrated and dilute solution. This you also studied in your 10th standard. Next is, now we deal with the numerical aspects of this chapter, concentration of solution. So how you find the concentration of solution? The concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of the solvent or solution. तो कितना amount of solute जो है वो solvent और solution के अंदर present है, that is known to be the concentration of the solution. So first formula is your concentration of solution is equal to the amount of solute upon में amount of solvent, or we can say amount of solute upon में amount of solution. That depends upon the condition of the question. But here in this chapter we are dealing with the mass by mass percentage of the solution and mass by volume percentage of the solution. So here we can express the in case of percentage. So when you dealing with the formula of mass by mass percentage of the solution, so the formula will be mass of solute upon mass of solution. Suppose you are getting the mass of solute and mass of solvent in the question, so how you can find the mass of solution? You add both of mass of solute plus mass of solvent, you get the mass of solution. So here in this way you can deal. This I can explain you with the help of example in the next two slides. Mass by mass percent of the solution is having the formula mass of solute upon mass of solution into 100. Mass by volume percentage of the solution is equal to mass of solute upon volume of solution into 100. So in this way we can find the concentration of the solution. For example, I can explain you more easily by example. So here is the example of concentration as a mass by mass percent. So sample question is calcium chloride CaCl2 can be used instead of the road salt to melt the ice on road during the winter. To determine how much chloride had been used on a nearby road, a student took a sample of slush to analysis. These all are the statement. You have to read it only. The sample has a mass of 23.47 gram. When the solution was evaporated, the residue had a mass of 4.58 gram. Assume that no other solute are present. तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया है, रोड सॉल्ट को नहीं यूज़ किया है आइस को मेल्ट करने पे ड्यूरिंग द विंटर्स. आपको कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट जानना है कि उसे हमने कितना यूज़ किया है और स्टूडेंट उसका कितना ग्राम का सैम्पल एनालाइज करा है. तो उसने द सैम्पल में ये निकला कि 23.47 ग्राम मास है
और सोल्यूशन जब इवेपोरेट हो गया तो रेसिड्यू मतलब जो उसका बचा हुआ पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट जो बचा वो 4.58 ग्राम्स का बचा और कोई सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं किया गया है. नाउ व्हाट इज़ द मेन एस्पेक्ट. तो व्हाट वाज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इन द स्लश. तो पहले तो हम सबसे पहले 1 मार्क इज़ कंसिडर हेयर फॉर द फॉर्मूला रिटन. फॉर्मूला आपको ज़रूर लिखना है जब आप आंसर कर रहे हैं. मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड बिफोर दैट यू हैव टू राइट द गिवन ऑल्सो हेयर नॉट रिटन हेयर. सबसे पहले तो आपको ये लिखना है मास ऑफ द सॉल्यूट जो भी आपका कैल्शियम क्लोराइड का मास जो कि आपका रेसिड्यू बचा है दैट मीन्स वो सॉल्यूट कंसिडर होगा. तो मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू 4.58 ग्राम और टोटल मास ऑफ क्या है सैम्पल का 23.47 ग्राम है. दैट मीन्स द मास ऑफ सोल्यूशन आपको 23.47 ग्राम दे रखा है. सॉल्वेंट आपको दे ही नहीं रखा, टोटल करके दे रखा है. तो मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 which is equal to 4.58 grams upon में 23.47 grams into 100. Then you have to calculate this factor and we get the answer 19.5%. That means therefore the mass by mass percent of calcium chloride is 19.5%. Very easy, but you have to see what is the mass of solute, what is the mass of solvent, what is the mass of solution. In case of the mass of solvent is given to you, then you have to one more step. Mass of solution is equal to mass of solute plus solvent. Then you put here the mass of solution. Don't write mass of solvent here. Consider the question very precisely. Next question, concentration as mass per volume percent. So here the question is, there are so many questions. There are 2 to 4 questions in your NCERT book. You can try that one also with the help of this slide. 2 ml of distilled water is added to 4 grams of the powdered drug. The final volume is 3 ml. That means volume of the solution is given to you. Final volume is written here. So that means the final volume is 3 ml. So the volume of solution is given to you, that is 3 ml. So no need to worry. What is the concentration of the drug in gram per 100 ml of the solution? That means you have to find the percentage. What is the percentage of the solution? So here 2 gram of the distilled water is added to the 4 gram. That means your solute become 4 gram. Here mass by volume question. So here mass is 4 gram. So the mass of solute, that means powdered drug, that is considered to be the 4 gram and the final volume become 3 ml. So there is no confusion between the cutting of the units gram and ml. Only you have to find the percentage here. When you find the percentage, there is no consideration in gram or ml. You are dealing with mass to volume or volume to mass, volume by volume, mass by volume. So there is no consideration. Here you only find the percentage. So don't confuse that you are dividing gram by ml. So here 4 grams upon 3 ml into 100. So we are getting 133%. So therefore the mass by volume percent is 133. So in this way you can also find. One more question. What is the percentage by volume of ethanol in the final solution when 85 ml of ethanol is diluted to a volume of 250 ml with water? So here dealing with the volume by volume. So mass by, you can see here mass by volume percent become exceeds from the 100%. Mass by mass and volume by volume percent is precedes 100%. So this is the factor here. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट हेयर कंसिडर टू बी द 85. दैट मीन्स इथेनॉल को हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो इथेनॉल यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज़ 85 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 250 ml. सो हेयर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हैविंग द फॉर्मूला volume of solute upon volume of solution into 100. So here volume of solute is 85 ml, volume of solution is 250 ml into 100 and you get answer 34%. This is the way you can find the percentage volume by volume, mass by mass and mass by volume. So these are the 3 sample questions. Moreover, concentration by mass by volume, here there is a twist.
Many people use the solution of Na3PO4 to clean walls before putting up wallpaper. Don't consider here what is Na3PO4, that is none of your business. Only see the questions and numeral part. The recommendation concentration, here there is the opposite one. Concentration, that means the percentage is given to you. What mass of Na3PO4 is needed to make the 2 liter of solution? That means the finalized solution is given to you, that is in 2 liter. You have to convert in ml. Don't go with the liter. Okay, because gram is dealing with the ml part. So here 2 liter solution, that means the final range of the solution volume is given to you, that is 2 liter. You have to convert 2 liter become 200 ml or 2000 ml. And here you get the mass. What is the mass of Na3PO4? That means you have to find the mass of the solute particles. Okay, so mass of solute is missing here. And you also get the concentration of the solution, that is mass by volume 1.7% in the question. So you have to write the formula, and before that you have to present the given. So first point you have to write the given concentration of the solution is equal to 1.7%. The total volume of the solution is given to you, that is 2 liter, which is equal to 2000 ml. Now here the formula, what you have to find the mass of the solute, inside the bracket you have to write Na3PO4. Now give the formula mass by volume percent, which is equal to mass of solute upon volume of solution into 100. So next line you have to put the values that is given to you in the question. 1.7% at the left hand side, which is equal to mass of solute upon 2000 into 100, and you get the mass of solute by calculating this 34 grams. That means the mass of the required solute Na3PO4 is your 34 grams. So in this way, these are the types of examples related to these concentration of solution: mass by mass, mass by volume, and volume by volume. You can deal it. These are the I think examples of your NCERT book. These are the solutions. So here we are dealing with the concentration, mass of solute. These are the in-text question, that 36 wala. So mass of solute upon mass of solution into 100. Here the given mass of solute, solvent दे रखा है this time. तो solution के लिए आपको 36 plus 100 करना पड़ेगा. You get 136 gram. That means the mass of solution become 136 gram. So the concentration here 36 upon 136 into 100, which is your 26.47%. Again there is one sample answer. Wait. Mass solution is equal to mass solute plus mass solvent, which is 12 plus 188 gram, that becomes 200 gram, and then you get the mass percent, mass of solute upon mass of solution into 100, and you get 12 grams upon 200 grams into 100, so that becomes 6%. So in this way you can deal with the numerical part of this chapter.